Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा जी। नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है, इसलिए हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Country's core sector output rises by 8.2% in June. Domestic benchmark indices close with gains of more than 0.5%. Sensex surges over 360 points to end above 66,500 mark, while Nifty settles beyond 19,750 level. And oil prices rise over 0.5%, heads for biggest monthly gains in over a year. जून में देश का कोर सेक्टर आउटपुट बढ़कर 8.2% हो गया। घरेलू शेयर बाजार आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 360 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 66,500 अंक के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19,750 के स्तर के पार बंद हुआ। तेल की कीमतों में आधा फीसद से अधिक की वृद्धि एक वर्ष में सबसे बड़े मासिक लाभ की ओर अग्रसर है। ICI यानी 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में जून 2022 के सूचकांक की तुलना में इस साल जून में अस्थायी रूप से 8.2% की वृद्धि हुई। स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन जून 2023 में पिछले वर्ष के जून महीने की तुलना में बढ़ गया। ICI 8 प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 8 कोर उद्योगों में IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा शामिल है। मार्च 2023 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को 3.6% से संशोधित कर 4.2% कर दिया गया है। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8% है। Shishir, how do you see this particular data which has come out today, the statistics of the core industries, the core sector output having increased by 8.2%? See, this is 5-month high, and the most important thing is that since they contribute 40% in overall industrial production, this number will be out on 12th of this month, and if the industrial production grows by a good number, and especially the manufacturing sector, that's a good sign because the manufacturing sector is a job multiplier. Yes. We see a lot of job creation in that particular sector. So that will be a good thing. The only thing at this moment of concern is the consumer durable sector. Where that sector is doing well or not, that we will come to know only on the on 12th only. But at this moment, the thing seems to be better if we see the 40% things, performance of the 40% things.
And we have our first listener of the day today who's called in to ask his question. That is Vikas Mehto from Kolkata. Mr. Mehto, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैंने बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट किया, तो इसका फ्यूचर आगे क्या है ये जानना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हमारा इंडिया में 4% लोग ही शेयर मार्केट में काम करता है, तो ये आगे दिन पे ये क्या इंक्रीज हो रहा है या एक ही घट रहा है? विकास जी, आप अपना दूसरा सवाल फिर से रिपीट करें। शेयर मार्केट में इंडिया पे 4%, लगभग 4% लोग काम करता है, ये ट्रेडिंग करता है, तो कुछ भी करता है, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, यही जानना चाहता हूँ मार्केट में। जी, ओके। जहां तक आपका पहला प्रश्न है विकास जी कि बैंकिंग सेक्टर का किस तरह से परफॉर्मेंस है, देखिए आने वाले समय में जिस तरह से लोन ग्रोथ है और अगर इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है अगले 6-8 महीनों तक, तो शायद बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अच्छी होगी। और अभी के समय में अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में नए सिरे से खरीदारी हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है, और जिसका सबसे बड़ा इंडिकेशन बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, उसमें जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो शेयर बाजार में 4% लोग जो है वो भागीदारी करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि डीमैट अकाउंट का नंबर हर महीने किस तरीके से बढ़ रहा है। वो नंबर आज के दिन में अगर आप देखें तो 10 से 11 करोड़ 12 करोड़ के लगभग में पहुंच चुका है और उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरा, हमने एक नया बदलाव ये देखा है कि छोटे शहरों में और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हम लोग जिसको कहते हैं, वहां से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। ये एक काफी कहा जाए बहुत ही सकारात्मक संकेत है शेयर बाजार के लिए, क्योंकि अब अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहां पे बड़ी आबादी जो है वो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो हमारे यहाँ 4% 140 करोड़ की आबादी में ये संख्या तो कम ही दिखेगी। जी, हमारे अगले श्रोता जयपुर से हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, आपका मार्केट मंत्र में स्वागत है, प्रश्न पूछिए। हाँ, धन्यवाद। अच्छा सर, ये जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एफएनओ होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, अपना इक्विटी कैश होता है, ये डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए जितेंद्र जी, ये जो डेरिवेटिव शब्द है ये डिराइव से बना हुआ है। डिराइव का मतलब होता है कि आप किससे कीमत लेते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि बाजार में आप जाते हैं, आप सीधे सीधे कहते हैं 1 किलो ये दे दीजिए, 1 किलो वो दे दीजिए, तो एक अमुक सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ आप जाते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसके पीछे एक अमुक सामान होगा, यानी कि उस अमुक सामान की कीमत उस सामान की कीमत या उस सौदे की कीमत तय करेगी जो आप ले रहे हैं। मैं इसे एक और उदाहरण के तौर पे दूं, जैसे मान लीजिए कि आप एक इंडेक्स देखते हैं जिसको हम लोग सेंसेक्स या निफ्टी के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स में 30 शेयर शामिल है, तो उन 30 शेयरों की वैल्यू के आधार पर या होने वाले बदलाव के आधार पर सेंसेक्स की कीमत तय होती है। वही चीज निफ्टी में है 50 शेयरों के आधार पर। तो ये जो डेरिवेटिव है दरअसल एक ऐसा माध्यम है जो वायदा सौदों में आपको जाने की इजाजत देता है। और वायदा सौदों में याद रखिए कि जहां पर हम आज की कीमत नहीं बल्कि आने वाले दिनों की कीमत पर हम सौदा करते हैं। दाम बढ़ गया तो फायदा है, दाम घट गया तो घाटा है। एंड let's talk about the stock market because we've been, Shishir just told us all the details about what the derivatives are. Vibhuti? जी। घरेलू शेयर बाजार आज 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,500 अंकों के ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,750 के स्तर के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 367 अंक या 0.56% चढ़कर 66,528 पर बंद हुआ। निफ्टी 108 अंक या 0.55% बढ़कर 19,754 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.9% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% बढ़ गया। Domestic benchmark indices today closed with gains of more than 0.5%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended above the 66,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled beyond the 19,750 level. The Sensex climbed 367 points or 0.56% to settle at 66,528. The Nifty rose 108 points or 0.55% to end at 19,754. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.9%, while the small-cap index surged 1.3%.
In the Sensex Index, which is a pack of 30 companies, shares of 24 firms appreciated, while 6 declined. NTPC surged 4%, Power Grid climbed 3%, and Tech Mahindra advanced 2.3%. On the other hand, Bajaj Finance and Kotak Bank slumped 1.1% each, and Hindustan Unilever declined 0.9%. In sectoral indices at the BSE, except for 2 sectors, the rest 18 locked gains. Among the top gainers is the utilities sector, which jumped 2.5%, followed by power, which climbed 2.3%, and the metal sector rose 1.7%. On the other side, the FMCG slipped 0.4%, while healthcare ended flat at 0.04% in the negative category. The overall market breadth was positive as shares of 2,209 companies appreciated and 1,470 companies declined. A total of 199 shares remained unchanged. And we have our next caller online. That is Mr. K.S. Jenna from Noida. Mr. Jenna, welcome to the Market Mantra. Please ask your question. My question is, the market seems to be on a positive side, but chemical sectors are not doing well. Any reason? Talking about the specific sector, it all depends upon that what kind of policies at this moment we have, or what kind of geopolitical situations we have. At this moment, if we talk about a specific sector, like you asked about the chemical sector, there could be regions about some of the geopolitical regions, also of the prices at the global level. They may not be at a certain level which is attractive one, which is impacting the positive sentiment in the chemical stocks. इसी बीच नोएडा से हमारे श्रोता हैं अभिषेक जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए. Good evening. Just want to understand what is your view about market and fixed income category? Can you please repeat your question, Abhishek? To cut down or will remain with the same line? Abhishek, your voice is not very clear. It's breaking. Can you please repeat your question? Am I audible now? Yes, please go ahead. Yeah, I wanted to check about the market condition towards the debt market and the repo rate. Expecting any downside to happen, or will still be remaining same or status quo or moving upward? Okay, repo rate as of now, since the expectation was that we may have some kind of lowering during the third quarter of this fiscal, but considering the price surge in terms of vegetable, the expectation about inflation again touching 6%, so any kind of rate revision may be postponed for another quarter. So we will see some kind of revision. If that situation continues for the next 2 quarters, then we may see some rate revision in the first quarter of next calendar year, which is 24, or the last quarter of this fiscal. As of now, the debt market situation seems to be slightly stable at this moment. However, the only worry at this moment is that inflation number, if it reaches at certain level, and considering the interest rate revision by Fed Reserve and many of the European banks, they may have some impact on the debt market. But from the central bank in India, what we know as the Reserve Bank of India, if they continue with the pause for some more months, then we will see the 10-year yield at something around 7.01 or 7.02. And I think, Shishir, we should know by next week, because there is a RBI monthly monetary policy meeting. Yes, the bi-monthly monetary policy review will take place next week. We will have a situation, but what we are expecting that there may not be any change in the stance. Yes. But the real problem is the rate of inflation. If it rises, then, and considering the various other banks like Fed Reserve and the other European banks are doing rate hike, yes. So RBI will also have to think about a stance. But rate revision, I don't think it will take place in the next 2 or 3 quarters. And let's go on to our next caller from Gurugram. That is Varun. Varun, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Very good evening to Market Mantra team. Good evening. Please ask your question. Shishirji, my question is a general question regarding mutual funds. Say we have invested in mutual funds for our retirement planning or for the long term per se. But in the middle or short, in the middle term, if we find that we have a decent growth, say 30-40% the mutual fund portfolio is showing. So does that make sense that we redeem some part of it in between to take
benefit of that growth? Varunji, I think that would be very wise move. If you are earning more than, say, if you are earning in double digit, if your value is showing double digit growth in short and medium term, so it's a really good thing to redeem part of your holding and invest in some new instrument or invest in some new funds, which may be for another 3 to 5 years, and then you can go for that. That's a really good thing. At the same time, you can also think of diversifying your overall allocation, that taking out some profit from the mutual fund and go for, say, sovereign gold bond, or for, say, post office schemes like Sukanya Samriddhi scheme if you have a daughter below the age of 10 years, or a scheme like NSC, which are also doing well. And Varun, I would also like to tell you that if you want to ask any specific questions regarding, specifically only about mutual funds, we have a program on Sunday which is totally dedicated to mutual funds. You can call us on Sunday during that program and have your queries answered. And Dhirendra is the best man to answer all the mutual fund queries. Right. इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं हसमुख जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। अपना प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग, प्रश्न पूछिए। I got two questions. Question number one. Last week, one of the speaker was saying that China is available at 9p, India is at 22 plus. So my question is, number one, is there any market in the world costlier than us? Question number two, how more we can rise from here? Thanks. The second one is very difficult to answer because it's not a thing which we can be predicting. But as of now, the thing seems to be moving upwards, so we will see some rise. Coming about the P of 22 you mentioned, and you mentioned about the 9P for China. See, the problem with China is that we do not have a credible numbers from China. So believing on that number is sometimes very difficult, that what kind of P actually they have. In terms of India, if you talk about 22P, and if you talk about P of some other countries, I believe not many other countries are giving that kind of valuation. So in India it is still attractive, and that is why you must have seen, or you must have observed, that over $15 billion have been invested during the current calendar year. So that's a huge number, and that is happening because of attractive valuation. And now we have Mr. N.R. Prasad from Bangalore online. Mr. Prasad, welcome to the program. Please ask your question. Hi, good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Sinha, two questions. Government of India has tied up with Foxconn, and also in the SEBICon, AMD has committed that they will invest $500 million, that too in India and in Bangalore, and it will be operative from end of this year. So my question is, can we invest in this AMD and Foxconn for the manufacture of the semiconductors? My second question is, 7 out of the mid-cap companies failed miserably during July. So largely on the finance sector and FMCG. When can it revive? These are my two questions. Thank you. Mr. Prasad, before Shishir answers your question, let me tell you that in this particular program, we do not answer any company-specific queries. We do answer your queries which are related to specific sectors, but not company-specific. Yeah, that's right. I mean, that's the same answer which I was going to say. If you talk about the semiconductor or semicons thing, of course, that sector is very promising, and any opportunity of investment is a good opportunity. Coming to your second part, which is the mid-cap, you talked about that 7 out of 10 companies in the mid-cap sectors, they have not performed well. In fact, they have given a loss. The number for the month of July is very surprising, that the mid-cap index rose by 5% and the small cap rose by 7%. And if we take the April-July number, that number is 28%. And if you compare with the Sensex in the month of July, it was 2.7%. Nifty was also 2.7%. And during April-July period, Sensex grew by 15% and Nifty also grew by the 15%. So if you compare with the Sensex and Nifty, mid-cap has done well. Maybe the problem with the specific sector, or maybe the numbers for a particular 2 or 3 days period. As of now, we think that some of the mid-caps are doing well. And considering the overall buoyancy in the market, we may see some kind of positive movement in mid-cap during the next 3 to 5 months.
हम अपने श्रोता थाने से गुरुनाथ जी का प्रश्न लेंगे, उससे पहले रुपया का और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 101.68 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 1.2% चढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की तेजी रही। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.8% बढ़ा। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.5% बढ़ा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% बढ़ा। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.5% बढ़ गया। जर्मनी का डैक्स 0.03% की बढ़त के साथ लगभग सपाट कारोबार कर रहा था और लंदन का फुट्सी 0.07% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। गुरुनाथ जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अपना प्रश्न रखें। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, शिशिर सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो 18 अंडर जो 18 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं सर, ये आयकर के बारे में मेरा, तो इनको कहीं से भी इनकम जो टैक्सेबल है, अगर कोई गिफ्ट देता है जो टैक्सेबल मतलब बड़ा अमाउंट होता है या कहीं से भी इनको इनकम होती है, तो क्या इनको मतलब इनकम टैक्स आयकर रिटर्न जो भरना पड़ता है और भरना भी पड़ता है, अगर सेपरेटली इनको मतलब फाइल करना पड़ता है ITR कि इनके माता पिता के इसमें जोड़ा जाता है? थैंक यू सर। गुरुनाथ जी देखिए, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि वो उपहार किससे मिला है। अगर आपके माता पिताजी से मिल रहा है वो उनकी क्लबिंग की जा सकती है, लेकिन अगर किसी और से जो कि उनके खून के रिश्ते में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस पर नॉर्मल टैक्सेशन का सिस्टम लगेगा। जो कर की सामान्य व्यवस्था जो 5, 20 और 30 जो पुरानी कर व्यवस्था में है या नई कर व्यवस्था में जो अलग अलग दरें हैं उसके हिसाब से होगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनको टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स नहीं देने की सूरत एक ही हो सकती है कि जब उनके माता पिता ने उनको कोई गिफ्ट दिया है या खून के रिश्ते से गिफ्ट आया है। बाकी सूरत में उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। And let's move on to the next story. More than 43,000 cases of GST evasion have been registered in the country since 2020 and over 76,000 crore rupees have been recovered. This was stated by Finance Minister Nirmala Sitharaman in a written reply in the Lok Sabha today. The minister said a total of 2,784 cases of GST evasion were registered in the first 2 months of this fiscal year and 5,716 crore rupees have been recovered. She said more than 1,000 arrests have been made under the GST evasion. And let's take our next caller online. That is Mr. Anil Ahuja from Delhi. Mr. Ahuja, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, team. My simple question is, can we invest in Gift Nifty? Gift Nifty, yeah, it will be as a investor you have to open another Demat account provided by there, because that's not part of the Indian security system, but that's a part of the international thing. So that will be part of your LRS, just like what you are investing abroad in any kind of share, and that different account can be opened with that facility is being provided by the NSE's wing. So there you can open the account and can do the investment there. Let's move on to the commodities. Oil prices today rose more than 0.5% and are set to post their biggest monthly gains in more than a year on expectations that Saudi Arabia will extend voluntary output cuts in September and tighten global supply. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.42 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81.18 per barrel when reports last came in. Shishir, our caller just asked you about the Gift Nifty and also the fact that the Finance Minister has announced that now Indian companies can directly list their shares on foreign exchanges. What does it mean for the common investor and what are the advantages? So when we talk about the Gift Nifty, since this is available at the IFSC at Gandhinagar, which is a kind of special economic zone, so it is not a part of the Indian capital market system, but the global capital market system. There you can go and invest there. Only thing is that your normal Demat account, which is available with NSTL or CDSL, will not work. You have to open the different account. Now coming to the second part, that when the companies are going abroad, that's another option for them to raise money, and that may add some value to that
Other thing is that the capital raising from other market may be cheaper than what we are seeing here. So they will get access to the cheaper market. That will add value to the shares of that company in the local market. So there will be two shares available, one at the global market, one in the Indian market. For retail investors in India using Demat account with NSDL or CDSL, they can invest in that particular share. If they want to do the trading there, they will have to open a different account and they will have to comply with the regulations of other regulator. Right. इसी बीच सोना का हाल जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अगस्त अनुबंध के लिए सोने की कीमत में 182 रुपये की गिरावट आई। सोना 59,245 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध के लिए चांदी 9 रुपये की गिरावट के साथ 74,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,995 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में चांदी $24 और 43 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Shishir, today is the last day for filing income tax returns, and a lot of our listeners have been, in the last program also asked a lot of questions regarding it. So, as of now, the government has said that there is not going to be any extensions. For those who missed the deadline, what are the implications for them? The first thing is that they can file the belated return by 31st December 2023 with the penalty of ₹1,000 to ₹5,000. That is number one. If they have not been able to file the return by 11:59 p.m. Today, that means they are not going to adjust their law. This is number one. Also, when you are applying for visa, the 3-year return forms are necessary for there. There you may have some problem. So, not filing a return is not going to give you anything. At the same time, it may prove costly for you because on one hand, you have to pay ₹1,000 to ₹5,000 as the late fee. And if the tax is due, then 1% penal tax is there. If you haven't paid the advance tax last fiscal, then you have to pay another 1%. So, it will be a costly affair if you do not file by 11:59 hours today. Right, and that's all we have time for in the program today. Thank you so much for coming to the studio, Shishir, and answering the queries of our listeners. Thank you very much. And before we close, look at the headlines again. Country's core sector output rises by 8.2% in June. Domestic benchmark indices close with gains of more than 0.5%. Sensex surges over 360 points to end above 66,500 mark, while Nifty settles beyond the 19,750 level. Oil prices rise over 0.5%, heads for the biggest monthly gains in over a year. And that's all we have time for this. और अभी हिंदी में जो मुख्य समाचार हैं, जून में देश का कोर सेक्टर आउटपुट बढ़कर 8.2% हो गया। घरेलू शेयर बाजार आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 360 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 66,500 अंक के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19,750 के स्तर के पार बंद हुआ। तेल की कीमतों में आधा फीसद से अधिक की वृद्धि हुई, एक वर्ष में सबसे बड़े मासिक लाभ की ओर अग्रसर। And that's it in this edition of Market Mantra. We'll meet you again tomorrow at 6:30 p.m. with yet another round of your daily economic and business and finance news. Till then, from all of us, Namaskar. Namaskar. Market Mantra.